Hari itu kan kan tuh ada nomornya minat do pangkat itu kan mesin itu untuk kan tuh. Nah, kayak gitu tuh. Apa itu? Please mute yourself. Someone is unmute. Dia kena bel nah. Kalau tuh spirit ini ya. Kita tuh hari juga ya. Please mute. Someone is unmute. Okay. So once again, very good morning to everyone. So today's topic is insertion sort. So first of all, I think screen is everyone is visible. Yes, sir. Okay. So first of all, insertion sort. Last class we discussed about bubble sort and selection sort. Now another sorting algorithm that is called insertion sort. So first of all, we'll theoretically I will explain. After that, we'll take one example, and after that, algorithm is there, and through programming is there, and I will explain through programming also. So first of all, insertion sort is an in-place sorting algorithm. So why it is called is in-place sorting algorithm? So because when we'll sort the algorithm, so no extra memory, or that means it is no auxiliary data structure while sorting. That means no extra memory is required within the array element. Already array element is there, and we can sort within the array, same array. It is inspired from the way in which we sort playing card. So those who are playing card, so say, that means that means it is inspired from the way in which we sort playing card. तो जो लोग ताश खेले हो या फिर ताश के बारे में पता है तो उस कंसेप्ट को ही लेके यहाँ पे इंसर्शन सॉर्टिंग में लगाया गया है। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिला है कि कैसे ये इंसर्शन सॉर्ट का मेन कंसेप्ट जो है, जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें किस तरह से हम सॉर्टिंग करते हैं, वो है मेन कंसेप्ट। सो हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स? Now consider a following ascending order. That means we'll sort the element in ascending order by default. So these are the array element. Now our main job is to will sort it in ascending order. So first of all, see 6 to 11 7 5 are the array element, unsorted array element. So our job is to sort it. How we'll sort this array element? And with the help of insertion sort. So here we'll use the technique insertion sorting algorithm. So firstly, it selects the second element. That means we'll start from the second element. So now here second element is 2. After that, it checks whether it is smaller than any of the element before it. That means in before it only 6 is there. So here we'll check 2. That means 2 is less than 6. 2 is less than 6. So it shifts 6 towards and right and places 2 before it. So that means the resulting list is 2, 6, 11, 7, 5. So first of all, what we'll do? Now let's start from second element. So second element, you see which one is the second element. So second element is 2. So now you compare with 6. Before that 6 is there. So if 2 is less than 6, condition is true.
then just simply shift 6 towards right, 6 towards right shift हो जाएगा and places 2 before it. So this is the concept. तो यहाँ पे shifting हो रहा है, shifting and then the right position will place the 2. So this one is the firstly. Secondly, it select third element. So next third element is now 11. So it checks it is smaller than any of the element before it. So here we'll check same thing. 11 is greater than, first of all we'll check 2 and 6. So no shifting takes place because 11 is greater than 2 and 6. So the resulting list remains the same. So it selects the fourth element. So fourth element is 7. So fourth element is 7. Now it checks whether it is smaller than any of the elements before it. So now we'll check 7 is less than 11. 7 is less than 11. So it shifts 11 towards right. 11 towards right and places 7 before it. So now the resulting list is 2, 6, 7, 11, 5. Last fourth. So it selects the fifth element. So fifth element is 5. Now it checks whether it is smaller than any of the element before it. Since 5 is less than 6, less than 7, less than 11. So it shifts 6, 7, 11 towards right and places 5 before them. That means main concept. Yes, now visible. Yes, sir. बीच में नेटवर्क चला गया था, सॉरी फॉर दैट. Now fifth element. So now you check fifth element, same thing. So now fifth element. So 5 is less than 6, less than 7, less than 11. So main concept is that 5. So now first of all 6, 7 and 11. It shifts toward right. ये towards right shift हो गया and places 5 before them. Now 5 in place of this. So this is that means sorted element in ascending order. So now you check insertion sort algorithm. So now so just you see the example. So first of all, after that I will explain with the help of programming. So first of all, step 1 I equals to 1. So now sorted sub-array. So initially we are assuming 6 is a sorted sub-array and rest of the element is an unsorted sub-array. Okay. So we'll start from the second element. So second element is 2. So key element. So now 2 is a key element. Now we compare it with all elements of sorted sub-array. So only one element is there, 6. So 6 is a sorted element. So after that, what we'll do? Now just simply we'll check and in place of 6 towards right and in place of just in place of 6 we'll keep 2. So step 2 I equals to 2. So when I equals to 2, same thing. So sorted sub-array. So 2 and 6 is a sorted sub-array and rest of the element is an unsorted sub-array. So now we start. So key element is 11. So it is compared with 6, then 2. So I think no need to shifting because 11 is greater than this. Now sorted sub-array. Now sorted sub-array 2, 5, 11.
So key element, so it compare with 11, 5 and 2. So now 7 compare with this, and this is the concept. Now we'll start with the help of algorithm. Same thing, sorted sub-array. Now this one. So time complexity, let's see. I'll explain. First of all, I'll check. So again, I will take another example. So 60, 20, 11, and 70 and 50. So these are the unsorted elements. Now, first of all, what we will do? Now, यहाँ पे क्या किए? Now, first of all, 20 is the key element. Okay. So parallelly, I show the algorithm also. So main concept, theoretical concept. First of all, you try to clear your concept. We'll start from second element and check लेफ्ट साइड. इसका लेफ्ट में चेक करना है कि उससे बड़ा है या छोटा है. अगर इससे बड़ा है तो उसको शिफ्ट करना है 20 की तरफ और 20 इन प्लेस ऑफ यहाँ पे 20 को रखना है. तो यहाँ पे क्या किया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक एंड देन क्या हुआ, 20 इस जगह पे और 60 को शिफ्ट किया. नाउ next so when I equals to, now key element is 11. So now key element is 11. So now key element is 11. So 11, first of all we'll check with 60. So 11 is less than 60. Okay, condition is true. Then 60 कहाँ पे आएगा ना, शिफ्ट हो जाएगा एक राइट में. Again we will check 20. So now condition is true. So again 20 shift right towards right. So now 20 and 60, and now in this, that means in that place 11 is, we place 11. So ये है मेन कंसेप्ट. नेक्स्ट में क्या होगा ना, नेक्स्ट में की एलिमेंट क्या है ना 70. So key element is 70. So again we will check with 60, then 20, then 11. So यहाँ पे 60 में ही चेक करने से पता चलता है कि now this one is a, ये condition is false. So no issues. Simply 11, 20, 60 and 70. Because we'll compare with sorted elements. So 11, 20 and 60 already sorted sub-array. So if first element, that means this one is a false, then no need to compare with 20 and 11, because this 11, 20, 60 is already sorted. So that's why 11, 20, 60, 70. Okay. So now last 50 is a key element. So now again we'll check, start 50 and 70. So 50 and 70, so condition is true. So 70 right towards, then compare with 60, then 60 right towards, and in this place will that means 50 will come in that place. So this is the main concept. Okay. So इस concept में किसी का कोई doubt है? Now we'll start with the help of this one. So now we start from this code. This is the algorithm. So we'll start from I equals to 1 and I less than n I plus plus. So till now anyone have any doubt? Main concept कहाँ से start हो रहा है? So now A be an array with an element. A be an array with an element. Now the insertion sort algorithm used for sorting is as follows. So now we'll start I equals to 1, I less than n, I plus plus. So I equals to 1, I less than n, I plus plus. So now key element is, AI. So now we'll check key element is, so key element is AI. So यहाँ पे copy करते हैं this one. So now key element is AI.
So key element is AI. Now I value is 1. So I value is 1. That means now key element is 20. So AI value. So now you check. So that means key, यहाँ पे key का value क्या है? Key equals to 20. Yes, because I equals to 1, I less than and I plus plus. So now key equals to AI. So AI means A1. So A1, in place of A1, if you check the array element, so now I1 equals to, that means now क्या है ना 20. So key element is 20. Now next j equals to I minus 1. So now j value is j equals to I minus 1. So 1 minus 1, 0. Yes. So now you check j is greater than 0 and aj is greater than key. Aj is greater than key. So aj means aj. Now j value is 0. So that means a0. So in place of a0, which element is there? Anyone can say? A0. In A0 place, which element is there? Anyone can say? A0 in A0 11. position. A0 11, sir. position. No. A0 position 60 element is there. This is the array. Now A0, so 0 position. So yes, sir, 60. Yes. So now you compare 60. So that means now you check 60 is greater than 60 is greater than key. So now key means 20. Yes. So now condition is true. When condition is true, then क्या होगा ना a j plus 1. That means now a1. That means now j's value is 0. So a1 position, in a1 position, which element is there? aj. So now aj, that means aj one position में कौन सा आएगा? aj. So aj means 60. aj one position में, that means a1 position में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 60. Yes. Or anyone have any doubt? Yes, sir. That means just simply write shift. So that's why a1 position में aj. So aj, that means aj means a0 element. So a0 में क्या था? 60 था. तो वो just उसका right shift में हो गया. So now j value is j minus 1. That means now j's value is again 1 minus 0. That means 1 minus 1. That means 0. Yes. Now, so that means एकदम पहला स्टेप फास्ट. अब क्या होगा ना, अभी जो उसका वैल्यू अभी क्या हो जाएगा? अभी एजीएफ का वैल्यू क्या था? तो जे का वैल्यू अभी क्या है? जे माइनस माइनस. उसके बाद उसका वैल्यू क्या होगा ना, लास्ट में जब लूप कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली एजे प्लस 1. दैट मीन्स क्या है ना, इसका वैल्यू अभी माइनस में आ गया. तो -1 + 1, दैट मीन्स ए जीरो पोजिशन में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? की एलिमेंट. तो की एलिमेंट क्या है? 20. तो दैट मीन्स यहाँ पे ए जीरो पोजिशन में अभी क्या हुआ? फर्स्ट में ना ए जीरो पोजिशन में अभी क्या आ जाएगा? ए जीरो पोजिशन में अभी की एलिमेंट आ जाएगा. तो की एलिमेंट क्या था? 20. तो अभी फाइनली इस पोजीशन में क्या आ जाएगा ना? 20. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो aj प्लस 1 मीन्स ए जीरो पोजिशन में फाइनली लास्ट ए जीरो पोजिशन में क्या आ जाएगा ना? 20. तो ये फास्ट अगर देखेंगे आप, फर्स्ट इट विल चेक दिस वन. इस स्टेप के लिए यहाँ पे ये जो 6 i = 1 अभी फाइनली शिफ्टिंग होने के बाद 20 यहाँ पे हुआ और 60 यहाँ पे. ठीक है.
तो ये हुआ आपका पहला ऑपरेशन। अब नेक्स्ट क्या होगा ना, लूप के बाहर चलेंगे, अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम आई इक्वल्स टू, अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम आई इक्वल्स टू 2, so I equals to 2, so now key element is a2, key element is a2, so a2 means now a2 means 11, so a2 means 11, so a2 means 11, so now key element is 11 when I equals to 2, so key element is 11. Now j equals to I minus 1, that means j equals to 1, j equals to 1. Now we will check, so 1 is greater than 0, so 1 is greater than 0, 1 is greater than 0, and aj means a1, so a1 position mein which element is there, a1, so which element is there, a1 position, a1 position 60. which element is there, 60, so 60 is there, so just you compare with 60, that means 60 is greater than, compare with key element, so key element is 11, condition is true. So now aj plus 1 equals to aj, aj plus 1 is equals to aj. So now aj value अभी क्या है ना, a1 था, that means a2 position में which element, a2 position में which element आ गया ना, 60, so now 60 is 60. there, a2's element, so 60. Now j value is j minus 1, now j's value is 1, that means j's value is अभी कितना हो जाएगा, 9 से और एक कम हो जाएगा, दैट मीन्स नाउ 1 था, 1 से अभी नाउ j वैल्यू इज 0, सो j वैल्यू इज 0, नाउ j वैल्यू इज 0, दैट मीन्स j वैल्यू इज 0, so again we will check, so a0, so a0 position which element is there, a0 which element is there, in a0 11. position which element is there, 20, a0 position 20 element is there, so that means here again we'll check here, now a0 position that means 20, so 20 is greater than 11, condition is true, condition is true. Now a1 position, that means here in a1 position, a1 position which element is there, just right shift, जो राइट शिफ्ट करने के बाद दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 पोजीशन में 20, 20. यस 20. ओके, तो a0 पोजीशन अभी a1 में ये आ गया, अब उससे फिर माइनस हो जाएगा, तो अभी अभी क्या होगा लास्ट में, फाइनली एक्चुअल में जो कंसेप्ट है इसका, जो शिफ्टिंग हो गया, शिफ्टिंग होने के बाद दैट मीन्स नाउ 20 60 एंड इन इस प्लेस में अभी क्या आ जाएगा ना 11 आ जाएगा इन a0 पोजीशन 11, दैट मीन्स यहाँ पे मेन कंसेप्ट इज 20 पहले 60 शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, 20 शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, और फाइनली लास्टली जो की एलिमेंट इन फर्स्ट पोजीशन, जहाँ पे कंडीशन इज फॉल्स हो रहा है उस पोजीशन में की एलिमेंट आ गया, दैट मीन्स नाउ अभी a0 पोजीशन में अभी क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11. ठीक। देखो इसके साथ कंपेयर करके देखिए आप, अभी यहाँ पे ये आ गया व्हेन i इक्वल्स टू, फिर अभी लूप आगे जाएगा, तो जब i इक्वल्स टू 3, so when i equals to 3 then key element is, when i equals to 3 so key element is 20. 70, 20. yes 70, so same thing will repeat, so अभी यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे 60, तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर उसका बाहर आ जाएंगे, जब लूप के बाहर आ गए अभी इसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर अगेन आई का वैल्यू अभी स्टार्ट होगा, आई का वैल्यू फिर अभी अभी हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4, तो अभी आई का वैल्यू जब 4, तो की एलिमेंट इज नाउ 50, नाउ की एलिमेंट इज 50, so again we will start from 50, जब 50 compare with 70, so condition is true, so when condition is true then 70 कहाँ पे आ जाएगा इन प्लेस ऑफ
that means right shift. Again we'll check 60, then right shift. Now when condition is false, when condition is false, so that time just simply aj plus 1 की जगह पे की एलिमेंट आ जाएगा. So aj, in aj plus 1 में जब की एलिमेंट, that means in place, that place 50 will come. और ये कब तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो चेक कर रहे हैं j इज ग्रेटर देन 0 एंड aj, दोनों कंडीशन, एंड मतलब दोनों कंडीशन इज ट्रू, देन ये then after that will enter in this कंडीशन. ठीक है, तो ये है मेन कंसेप्ट इसका. आई थिंक अभी क्लियर हुआ. 50 अब वही सेम थिंग होगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हुआ. अगर किसी का कोई यस तो Yes, yes. एक स्टेप में आप किए हैं, हाँ हम लोगों को सर अलग अलग स्टेप में ना करना पड़ेगा, जैसे एक का हो गया फिर दूसरा स्टेप में फिर दूसरा लिखना पड़ेगा, अलग अलग एल्गोरिदम में लिखना पड़ेगा, या फिर एक ही हाँ. में जैसे आप जो हो जाएगा? एग्जांपल लेके दिखाएंगे ना, अब कहाँ सेम Yes, एक yes. ही एरिया में ही हो रहा है ये चीज, हम जब समझाने के लिए वो चीज दिखा रहे हैं. नहीं सर, नहीं सर, ये ठीक है, एरे का ठीक है, एरे का स्टेप ठीक है, जो एल्गोरिदम बनाया है हाँ उस हाँ टाइम देखिए, हाँ. उसमें एल्गोरिदम में आप एक में ही आप एक में ही कर करके दिखा रहे हैं, हम लोगों को एक में नहीं ना दिखाना है, अलग अलग स्टेप में करके दिखाना है ना. हाँ, लेकिन आपको अलग दिखाना नहीं. आपको देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एल्गोरिदम लिख दिया और ये एग्जांपल देके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देने से दैट इज एनफ. ठीक है, सेम मैं जैसे किया हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसी चीज को आपको करके दिखाना है कि ये स्टेप 1 में व्हेन आई इक्वल्स टू दिस वन देन दिस, और सिंपली आपको ये इस चीज को लिख देना है बस. ये मेन कंसेप्ट, ये मेन लॉजिक है. ठीक है, आपको इतना ही करना है. इसको इंडिविजुअली आपको दिखाना है, ये मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको जस्ट ये एल्गोरिथम जो है इसको लिख के और सिंपली करना है. ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको करना है, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वन बाय वन इसको लिख सकते हो, लेकिन सिंपली आपको जो एल्गोरिथम लिखना है और जस्ट स्टेप बाय स्टेप जो मैंने दिखाया आपको वही चीज करना है. ठीक है, तो ये चीज आपको करना है. अच्छा, नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So time complexity is best case, average case, and worst case. So best case, when best case occurs, when element is already sorted. When elements are already sorted, that means now 11, 20, 70. So these elements are already sorted. So ये जो है आपका now this one is a best case. Now this one is a best case. 11, 20, 50, 60, and 70. So the element, these all element are sorted element. Yes. So when elements are sorted, so this is the best case, and best case time complexity is ON, because in that case just you start from second element. So 20 is 11, condition is false. Again we will start from 50, 20, condition is false. 60, 50, 70, 50. Only O big ON, that means O of N. Time complexity is ON. क्यों यहाँ पे आपका जस्ट एक बार एक एक करके चेक कर रहे हैं, ये भी कंडीशन ओनली O of N minus 1. So O of N minus 1, that means यहाँ पे time complexity O of N. So this one is a best case. So best case time complexity is best case time complexity is big ON. अच्छा, अब बताइए वर्स्ट केस कब होगा ना. वर्स्ट केस कब होगा, when elements are unsorted, when elements are just descending order. descending order means अभी यहाँ पे क्या होगा ना, इसका descending order means
डिसेंडिंग ऑर्डर में जब होगा तो वो वर्स्ट केस होगा, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, यहाँ पे 70, नाउ 70, देन 60, then 50, then 20, then 11. So now let's start from here. So every time we'll insertion is, that means 60 70 is compared, and then 70 is in place, the right shift, and 60 in place. Again we start from 50. This, so this one is a worst case time complexity. Worst case time complexity.